So students, welcome again. आज आम डिस्कसन करवा बहुत सिंपल जिनस केतटा जिनस अच्छी गोटे हूँ फास्ट आम कहवा व्हाट इज क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस रो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट कौन से गोटे पढ़ा तार रिलेटेड लॉज तापर पढ़ा एप्लिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तापर किछटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करबा एवं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पार्ट 1 फर्स्ट सेगमेंट अछि ताको हमें वाइंड अप करबा आज। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो पहले दीटा जिंस अछि, गोटे होछि क्वालिटेटिव, गोटे होछि क्वांटिटेटिव। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज मैं तुमको पचारि जे where have you been कुआड़ तुम जाइथिलो, तुम्हें कहबो जे सर मार्केट जाइछि टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। ओके, ताले मु मन मन गोटे आइडिया कर देली कोन होसी मार्केट जाइथिला आलू बाइगण कोन सब आनिथिबो। सो दैट इज क्वालिटेटिव। जदि मु पचारली अरे बाजार जाइथिलु कोन केते केते क्वांटिटी रो कोन आनिलु, ताले तुम्हें कहबो कोन जे मु 1 केजी आलू आनिली, 1 केजी बाइगण आनिली, 1 केजी पोटल आनिली, हाफ केजी तुमरो रसुन आनिली कि अदा आनिली। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स whenever you are talking about quantity you must mention how much quantity you have brought. ओके, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिफरेंस होची है। क्वालिटेटिव कहले हम जाइथिली बाजार को आलू बाइगण एसु जिंस आनिछि, परिबा आनिछि, तो दैट इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहले केते केते क्वांटिटी रो मु नै कि आछि। सेही बढिया इलेक्ट्रोलिसिस रो दीटा पार्ट अछि, गोटे होछि क्वालिटेटिव पार्ट, गोटे होछि क्वांटिटेटिव पार्ट। क्वालिटेटिव पार्ट रे हमें पढले कोन ना, सपोज मु कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस करिवि ताले मोर कैथोड रे कोन डिपॉजिट हबो, एनोड रे कोन डिपॉजिट हबो। सो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव पार्ट। सपोज कॉपर सल्फेट को नेली, एक्वस कॉपर सल्फेट को नेली डिपॉजिट ताको मु इलेक्ट्रोलिसिस कली यूजिंग सपोज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, ताले कोन हबो ना कॉपर डिपॉजिट हबो कोठी कैथोड रे, आउ ऑक्सीजन गैस लिबरेट हबो एनोड रे। ओके, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव पार्ट। क्वांटिटेटिव कहले कोन ना, सपोज मु कहली 3 एम्पियर ऑफ करंट मु 3 सेकंड पे पास कली, मोर केते क्वांटिटी रो कॉपर डिपॉजिट हला आ केते क्वांटिटी रो ऑक्सीजन लिबरेट हला। नाउ इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव पार्ट। ओके, क्वालिटेटिव पार्ट रे हम पढिले कोन डिपॉजिट हला, क्वांटिटेटिव पार्ट रे पढिबा कोन ना केते क्वांटिटी रो डिपॉजिट हला। So that is the difference between qualitative and quantitative treatment of electrolysis. तो quantitative part टा Faraday's law ये हमें पढ़ो। Faraday's law रो फर्स्ट लॉ तुमको ऑलरेडी बुझाई जाई छी। ओके, तो Faraday's law रे हमें पढ़छे कोन ना, the quantity of substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. That is very simple. It has come from a very inherent concept. Suppose मु बाजार को जाई छी चिकन किनिया पे। ओके, चिकन केजी होछ मनकर 100 रुपीस सपोज। ओके, ताहले मु मनकर नै कि 50 टका नै जाई छी, ताहले मु केते आनिबी, हाफ केजी चिकन नै के आसी। सपोज आई हैव टेकन 100 रुपीस, ताले मु 1 केजी नै के आसी। यदि मु 200 रुपीस नै कि जाई छी ताले आई कैन ब्रिंग 2 केजी ऑफ चिकन। ताले केते चिकन आनिबी कहा ऊपर डिपेंड कला ना, मु केते पैसा नै कि जाई छी, केते टंका नै कि जाई छी ता ऊपर डिपेंड कला मु केते चिकन नै कि आसी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू Faraday's law। केते सब्सटेंस डिपॉजिट हबो कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना केते क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी तमे पास करछ। ओके,
So let me tell you a very simple concept. What is the difference between electricity and current? You might be thinking of the two words similar to each other, but there is a difference. Okay, electricity कहले पहले it is called Q, denoted by the letter Q, and current कहले I, or some people also write it as C. Current to C लिख पाइबो मतलब I लिख पाइबो, जेहेतु हमें I पढ़े तो let us take the I. Okay, so Q is called electricity, I is called current. What is the unit of electricity? Electricity रो unit होची पहले coulomb. Okay, आउ current रो unit होची कौन ना ampere. So what is the relation between them? ना Q equal to I into T. तले ampere to second रे गुणिले तुमरो coulomb हो. तले coulomb कहार electricity रो unit. आउ ampere कहार unit ना current रो unit होची ampere. Okay, so the quantity of substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity by Q passed through that. Physics रे Q टाको कहती charge, chemistry टाको कहती electricity. Okay, physics रे भी तुम्हारो Faraday's law पढ़ो, सेठी तमे Q टाको पढ़िबो charge, किंतु एठी आमे chemistry रे पढ़िबा टाको electricity. Okay, तो Faraday's first law कौन कहितला ना W directly proportional to Q. Okay, this is called Faraday's law. First, Faraday's second law कौन कहूची तार स्टेटमेंट ता लिखि छी. देख कौन ना when same quantity of electricity is passed through more than one electrolyte connected in series, then quantity of substance deposited or liberated at each electrode is directly proportional to the equivalent mass of the substance deposited or liberated. ता तो very simple. सेठी आमे गोटिए इलेक्ट्रोलाइट कथा कहउले, एठी आमे more than one electrolyte कथा कहिबा. जेतले गोटिए इलेक्ट्रोलाइट नउथिले इलेक्ट्रोलाइट पई W directly proportional to कहउले कोन Q. ओके, ए जो वर्ड आसीले देखो सीरीज कनेक्शन, कनेक्टेड इन सीरीज, एटा फिजिक्स रो कांसेप्ट. फिजिक्स रे तुमरो दी प्रकार कनेक्शन पढ़ा जाए. गोटे होची सीरीज कनेक्शन, गोटे होची पैरेलल कनेक्शन. तो माने पढिथिबो रेजिस्टर बा गोटे तार को सीरीज कनेक्शन करा जाए, तापर लगा जाए. आ गोटे होची पैरेलल कनेक्शन, ता तो सब जाको ऊपर तळ ही रखा हबो, गोटिए मुंड को ताको जोड़ा जाए. सो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन फिजिक्स रे पढिथिबा. एटी सेमि कोन करिबा ना दुईटा कि तीनटा कि चारटा कि पांचटा कि छटा इलेक्ट्रोलाइट नबा. कोथरे ना अलगा अलगा टैंक रे एटी मु तीनटा इलेक्ट्रोलाइट नेछि. as per the note given to you से अनुसार मु करिछि टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3. ए तीनटा टैंक रे मु तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट नेछि. कोन ना सपोज मु एटी नेली जिंक सल्फेट, एटी नेली कॉपर सल्फेट, एटी नेली सल्फ्यूरिक एसिड. और आई कैन से एटी मु जिंक सल्फेट नेकी, एटी कॉपर सल्फेट नेकी, एटी सिल्वर नाइट्रेट नै पारे, नले एटी कॉपर सल्फेट नेकी, एटी सिल्वर नाइट्रेट नेकी, एटी सल्फ्यूरिक एसिड नै पारे. नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक व्हाटएवर आई लाइक. ओके, आउ एटी प्रत्येक टैंक रे मु दीटा इलेक्ट्रोड नेची, गोटे एनोड, गोटे होची कैथोड. देखो प्ले सब जगह रे गोटे प्लस, गोटे माइनस, गोटे प्लस, गोटे माइनस, गोटे प्लस, गोटे माइनस. तो माइनस ता होची कोन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एटा कोन कैथोड. आउ प्लस ता होची कोन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ता कोन कोन ना एनोड. ताले सब जगह रे गोटे गोटे कैथोड, गोटे गोटे एनोड अछि. जदि मु यार इलेक्ट्रोलिसिस कली ताहले एठी कैथोड रे कोन डिपोजिट होबो, एठी कैथोड रे डिपोजिट होबो कोन ना जिंक. जिंक सब्सटेंस ता एठी डिपोजिट होबो. कोन जिंक ओटा डिपोजिट होबो ना जिंक. एठी कोन होबो ना एठी कॉपर डिपोजिट होबो. ओके, आ एठी कोन एठी डिपोजिट होबो नाही, एठी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होबो. कोन कैथोड ताले प्लीज जानि पल्लो कोन कोन होला. एठी जिंक डिपोजिट होला, एठी कॉपर डिपोजिट होला, एठी हाइड्रोजन लिबरेट होला. ताले ए लॉ कोन कहूची अकॉर्डिंग टू दिस Faraday's second law. Faraday's second law कहूची कोन ना weight of zinc deposited
केते ना सपोज W zinc. Okay, weight of copper deposited equal to what? Suppose copper. Weight of hydrogen gas liberated, suppose W hydrogen. तापर हम लिखिबा कोन आ गोटे जिंस लिखिबा ना इक्विवेलेंट mass of zinc, let it be E zinc. Equivalent mass of zinc को लिखली E zinc. सेम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर को लिखली केते ना E कॉपर. आ इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन को लिखली कोन ना E हाइड्रोजन. हेलो व्हाट डज द लॉ सजेस्ट? सेकंड लॉ कोन कहूची ना सेकंड लॉ कहूची mass of the substance deposited at an electrode. माने suppose मु जिंक कथा कहि weight of the zinc deposited is directly proportional to equivalent mass of zinc. Okay, let it be equation 1. आउ कोन कहूची ना weight of copper deposited is directly proportional to equivalent mass of copper, and weight of hydrogen gas liberated directly proportional to equivalent mass of hydrogen. Let it be equation 2 and let it be equation 3. Okay, now these are the basic relations of Faraday's second law, but we can fabricate, we can derive more relations out of these three relations. Suppose I will divide equation 1 by 2. So I take equation 1 divided by equation 2. So what will happen? W zinc by W copper will be equal to how much? E zinc by E copper. Now this is a subsidiary equation. Out the equation that you derive well, out of the three equation I have derived this equation. How can it be? ना यदि मैं equation 1 को equation 3 रे divide करें, तब मैं कौन लिख ना W zinc by W hydrogen equal to E zinc by E hydrogen. Okay, I can take this equation 4, I can take this equation 5, or if I divide equation 1 by 3, then I can write then suppose 2 by 3, so into 1 by 3 कर दीजिए 2 by 3 वाली. So this will be weight of copper by weight of hydrogen equal to E of copper by E of hydrogen. Okay, this is another equation. So let it be equation 6. How can I be? Also I can write W zinc is to W copper is to W hydrogen will be equal to E zinc, E copper, E hydrogen. Okay, so this may be another relation derived out of this basic three equations. Okay, so these are different equations of Faraday's second law. And interesting thing I want to say that Faraday's second law is nothing a different law. It is derived from first law itself, because you have already studied in the first law. What you have studied in first law? First law you have studied W directly proportional to Q, right? Or W is equal to Z into Q. So what is this Z? Z is called electrochemical equivalent, right? What is Z? Z is called electrochemical equivalent. Now how much is Z? How will you find out Z? Z is equal to E by 96500. You have already worked out several examples, numericals on the basis of this equation. So it is quite simple. So W is equal to EQ by 96500. Now what is Q? Q is the quantity of electricity. 96500 is a fixed quantity. So if you are passing fixed quantity of electricity, then W directly proportional to E, isn't it? Because this is constant, then W directly proportional to E. So second law is derived from first law itself. Second law जोटा कहूची W directly proportional to equivalent mass of substance deposited
जोटा कि डिराइव हेची इट इज कोथ्रू फर्स्ट लॉ व्हिच इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ओके, सो this is about your second law. So we have now two equivalents. कौन ना गोटे इक्विवेलेंट पढ़ले Z आउ गोटे इक्विवेलेंट पढ़ले कौन E. Z को कहती कौन ना EC. What is that? Electrochemical equivalent. And what is E? E is C. माने कौन ना केमिकल इक्विवेलेंट. ओके, which is equal to equivalent mass of the substance. Okay, so you have two equivalents, one is Z and another is E. Z is called electrochemical equivalent and E is called chemical equivalent. So what is the relation between them? Z equal to E by 96500. So this is the relationship between electrochemical equivalent and chemical equivalent, right? So another thing I want to mention here is gram molecular volume. Gram molecular volume. So in the Faraday's law we have mentioned that the quantity of substance deposited oblique liberated, that means some substances are getting deposited like copper, like zinc, like silver, and some substances are liberated, that means they are gases. Hydrogen is getting liberated, oxygen is getting liberated, chlorine is getting liberated. So the gases are liberated. Okay, so in order to quantify those gases, we introduce the term is called gram molecular volume. So what is gram molecular volume? This is GMV, the volume occupied by, okay, the volume occupied by 1 mole of a gas at NTP or STP. Okay, what is NTP? Normal temperature and pressure. The normal temperature is 273 Kelvin and normal pressure is 1 atm. Okay, so what is the volume occupied by 1 mole of gas? 1 mole of gas, in fact ideal gas, occupies a volume of 22.4 liter or 22,400 milliliter at NTP. So this volume is called gram molecular volume or GMV. Suppose I take the example of hydrogen, the lightest gas, and if I say what is the quantity of 1 GMV of hydrogen, so this is 22,400 ml or 22.4 liter of the gas. Another thing I want to mention is the electrolysis, what we have already studied. Sometimes some questions are asked like what are the products liberated or deposited at cathode and anode if we carry out electrolysis using such electrodes. Let me remind you that electrodes are of two types. In the electrochemistry part 1 we will study about 2 types of electrodes, but in electrochemistry part 2 we will study about 4 types of electrodes. I am repeating again. In electrochemistry 1 we will study about 2 types of electrodes. What are those electrodes? One is called attackable electrodes. Attackable electrodes, and is non-attackable electrodes. So what are they? What is attackable electrode? What is non-attackable electrode? Attack बोले कौन आक्रमण करिया. आक्रमण करिया बोले कौन? When you are attacking something, its mass reduces. Okay. So
Attackable electrodes are those electrodes whose mass depletes, decreases, changes during the electrolysis. Suppose you carry out electrolysis for half an hour, initial mass of the electrode is suppose 20 gram, and after electrolysis you will find the electrode mass has reduced to 10 gram or 12 gram or 15 gram. So initially we are taking 20 gram of the electrode, now we are getting only 12 gram of electrode. So the mass has been reduced, electrode's mass has been reduced, and that kind of electrode is called attackable electrode. And non-attackable electrode, you might have predicted that by yourself. Non-attackable means the electrode whose mass does not change throughout the reaction, throughout the electrolysis, is called non-attackable electrodes. Okay, so what are non-attackable electrodes? Non-attackable electrodes are usually platinum, graphite, steel, etc. Okay, these are non-attackable electrodes. Okay, you can use platinum or graphite in any of the reactions. What about attackable electrodes? Suppose you are using a copper electrode and your electrolyte is copper sulfate, right? You are using copper electrode and your electrolyte is copper sulfate, then copper will deplete. Copper will reduce its mass. This electrode will reduce its mass and it is called attackable electrode. Another thing, if you are using a silver electrode, silver bole kon? Rupa. Okay? If you are using the silver electrode and the electrolyte is AgNO3, silver nitrate, then this electrode will decrease its mass, deplete. So these are called attackable electrodes. Let me explain you. If you are using attackable electrode, what is the reaction? And if you are using non-attackable electrode, what will be the reaction? Suppose, see, let us take the example of copper sulfate, right? CuSO4, copper sulfate aqueous copper sulfate solution. Okay, so now we will study about two types of reactions. Here we have used attackable Cu electrode. Okay, and here you have used non-attackable platinum electrode. What will happen? See. Okay, this is the tank, right? Here are the two platinum rods. These are platinum rods, and we are connecting here to a battery, a key, and some wires. Okay, see, here is I have used platinum electrodes, and this is copper sulfate solution. Okay, CuSO4 aqueous. Now what is the setup here? I have taken the solution and I have used the copper rods. Here are the copper rods, and the solution is CuSO4 aqueous, and this is connected to battery, then a key, and then it is connected to the other electrode. Okay, see, what will be the reaction here and what will be the reaction here? Here I have taken platinum electrode and here I have used copper electrode. Okay, if it is platinum electrode, that means there will be no depletion of this electrodes. Electrode will not participate in reaction. So here is the normal case. For example, CuSO4 gives rise to Cu2 plus SO4 2 minus. It is aqueous. It is aqueous. Okay, water has H2O. Water contains H plus. Since the medium is aqueous medium, the solvent water will also dissociate to produce H plus and OH minus. Okay. So what are the two electrodes? What are the two cations? One cation is copper and other cation is H plus. Out of copper and H plus, this will migrate towards cathode. तो मोटे सीरीज को हाइट लागले से सीरीज रे मैडम मेंशन करथिले जे कोटा आगो जीवो कोटा पछे जीवो से सीरीज ता देखि दबो देखि कॉपर ता जीवो ताले कि कोन रिएक्शन हबो 8 कैथोड परे कोन रिएक्शन हबो ना Cu2 plus 2 electron gives rise to Cu solid, that means it will be deposited, copper will be deposited, and another anion gate sulfate अछि और OH minus sulfate और OH minus बिसरे
OH माइनस टा फास्ट मूव करे तो एट एनोड कोन हबो ना OH माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू OH ओके आउ चारटा OH मिसिकरी तब कोन 2H2O प्लस O2 गैस ताले कोन होला एठी कोन होला एटा होची माइनस माने एटा कोन कैथोड दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड ताले एठी कोन हबो या ऊपर सब कॉपर डिपॉजिट हबो ओके एठी कोन हबो ए सब कॉपर मेटल डिपॉजिट हबो दिस आर कॉल्ड कॉपर मेटल्स डिपॉजिट हबो एठी कोन हबो एठी बबल्स आकारे ऑक्सीजन गैस बाहिर ओके सब बबल्स आकारे ऑक्सीजन गैस बाहिर okay so what happens here the overall reaction is copper will be deposited here and oxygen gas will be liberated at the anode now let us check out in this case what will happen eti kon hobo eti dekho eti cathode reaction please jaha share ho cathode reaction is exactly same eta hoji cathode reaction is exactly same as it happened here. That means copper will be deposited on this. Copper will be deposited. Cu will be deposited at cathode. So the anode reaction will be different. What is anode reaction? The anode will start melting away. Now the anode ta kon hobo धीरे धीरे तारो कौन हो मास टा कमिबो हैव यू एवर सीन मिस्त्री देखियो बोले चीनी रो मिस्त्री तयार हुए गोटे मिस्त्री को आनी करी गोटे तमे सूतारे टाइट करी बांधी दबो बांधी करी गोटे काच ग्लास रे पानी नै जिवो से मिस्त्री टा केमते बुड़ेबो ता ऊपर हला झुले की रखिबो केते समय पर देखियो धीरे धीरे कोन होची ना से मिस्त्री रो जो चीनी बा सुगर टा कोन होची पानी रे धीरे धीरे मेल्ट करी जाउची ओके तो मेल्ट करी जाउची तार मास रिड्यूस होउची बा तमे जो आइसक्रीम खाउ तो बोले देखियो आइसक्रीम कोन बे ठप की तार पानी कोन बे बळ चल आइसक्रीम रो प्रथम मास ता अधिक थाए किंतु 5 मिनिट पर आइसक्रीम कोन रा जाई थबो बुझिला तो सेई जो एठी कोन होबो ना एनोड टा डिप्लीट करबो एनोड टा कोन होबो डिप्लीशन होबो एनोड तार एट एनोड रिएक्शन कोन होबो एट एनोड रिएक्शन होबो कोन ना कॉपर सॉलिड जोटा कि एओडी को dissolve करी दबो कोन ना copper 2 plus aqueous plus 2 electron so this is the difference when we are taking the same electrolyte but using two different kinds of electrodes here I have used non attackable platinum electrode okay what happened copper is deposited at cathode and oxygen gas is liberated at anode there is no harm to the electrodes there is no difference or decrease in mass of the electrodes these are called platinum electrodes or non attackable electrodes but here cathode to the cathode electrode there is no change it is same in fact copper is getting deposited on cathode but what about anode the anode mass is depleting is decreasing is reducing एनोड रो मास कोन होची धीरे कमी जाउची कोन पई कमुची ना एनोड रे थिबा कॉपर मेटल ग्रेजुअली सॉल्यूशन भितर को डिसॉल्व हे जाउची मिस्त्री टा को पानी रे पकेले जेंति पानी भितर से डिसॉल्व हे चलची सेंति ए कॉपर मेटल टा कोन होथुवा ना दुर्बलतर माने इट विल बी वीकर एंड वीकर एंड at some time it will collapse अब तो तळे पड़ी जाउ सब जले मेल्ट कर दियो कोन जो तळे पड़ी जाउ so this is called attackable electrode पिले मन रखो जदि तुम परीक्षा रे पढिला what is the product of electrolysis or what are the products of electrolysis when you are carrying out electrolysis of some substance let it be copper sulfate let it be silver nitrate let it be any other metal salt zinc sulfate okay what will be the product at anode and what will be the product at cathode if you are using platinum electrode यदि platinum electrode देइथिबो ताले तम भाबो एटा नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड कथा कहिछि जदि देइथिबो जिंक इलेक्ट्रोड बा कॉपर इलेक्ट्रोड बा सिल्वर इलेक्ट्रोड ताले इमिडिएटली भाबो कोन एटा होछि अटैकेबल इलेक्ट्रोड कथा कुहाइछि यदि अटैकेबल इलेक्ट्रोड कथा कुहाइछि
ताहले एनोड रिएक्शन टी कोन हबो ना कैथोड रो ऑपोजिट बट कैथोड देखो कोन हिला एटी कैथोड रिएक्शन कोन हेबियो कैथोड रिएक्शन देखो एटी जा सेटी से कैथोड रिएक्शन से कोन ना Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कोन Cu थिला कैथोड रे जो रिएक्शन लेखि दिबो एनोड रे ताके उल्टे दबो काम सिक्स ता अर्थ एनोड रे जो रिएक्शन हबो कैथोड रे तार ऑपोजिट बा कैथोड रे जो रिएक्शन हबो एनोड रे तार ऑपोजिट रिएक्शन ता बुझियला सो दिस इज ए स्मॉल थिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट सरी गला इलेक्ट्रोलिसिस रो क्वांटिफिकेशन पार्ट सरी गला सुनो छोटो प्रॉब्लम रे कोची फारे सेकंड लो तापर हम जिबा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ओके छोटिया प्रॉब्लम कोची देखो very simple suppose I am taking 3 electrodes okay and every case I am using platinum electrode no use of attackable electrode only platinum electrode non attackable platinum electrodes at all 3 cases I am using the same okay this is the battery okay plus minus plus minus plus minus okay so suppose here is my electrolyte silver nitrate AgNO3 aqueous here is my electrolyte suppose CuSO4 aqueous okay and here is my electrolyte LCl3 aqueous suppose okay if these three are the electrolytes and all are platinum electrodes and I am passing 3 Faraday of electricity okay what I am doing I am passing 3 Faraday of electricity. Okay, so what will happen? Which metal will be deposited here? Here silver metal will be deposited. Here copper metal will be deposited, and here aluminum metal will be deposited. Suppose. Okay, so जदि मैं 3 Faraday देली electricity, ताले एठी को जगह रे केते amount रो deposit होबो ताले हम जानि छु कोन ना W equal to ZQ right W equal to ZQ ताले W copper ना W आगे silver होगा W silver equal to Z silver into Q जगह रे कौन पकेबो ना 3 Faraday right ताले what will be W silver equal to Z equal to कितने silver Z equal to Z of silver equal to E by 96500 ताले E कितने ना 108 ताले equivalent mass कितने atomic mass by 1 silver balance 1 ताले 108 by 96500 so what will be the quantity of silver W equal to 108 108 by 96500 into 3 into 96500 96500 965 ताले 3 into 108 80 ग्राम डिपोजिट हो ताले कितने डिपोजिट होला 3 into ताले इक्विवेलेंट मास 108 ओके एठी कोन होबो एडिशन की W copper equal to E by 96500 into Q टा होता है 3 Faraday 3 into 96500 अच्छा what is E कितने थी यार E होची 65 by 2 what is the atomic mass of copper এটা হচ্ছে 65 তো ডিভাইড বাই 32.5 তাহলে আর E কেতে হবে না 32.5 তাহলে এটা E কেতে পকেবা
32.5 by 96 पटिला into 3 रेडी केते डिपॉजिट ला 3 into e तब 3 in डिपॉजिट ला ओके इति समझ एल्युमिनियम सुनी कोन एल्युमिनियम रो w इक्वल टू z केते ना तर 9 by 965 w काई आपन मास 36 by 3 केते 9 ओके एल्युमिनियम रो आटे मास केते 37 by 3 केते 9 by 965 w into 3 5 965 w तो 969 पटिला 3 into 9 by t केते 3 ताल देखो सबठी 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट लाइक नहीं if you are passing 3 farad of electricity at each electrode you are getting 3 into respective equivalent mass of electrolyte okay so this is about your Faraday's second law so numericals I will send you and you will work out those numericals and I hope this time you can better do the numericals because already we have discussed more than 30 or more than 50 numericals already we have discussed. So the last part of this part 1 of electrolysis is applications of electrolysis. प्ले यार सबुठ कॉमन एप्लीकेशन तुम कोउ देखछो कहलो सबुठ कॉमन एप्लीकेशन होची तुमर हे जो तुम देखिथिबो इमिटेशन ज्वेलरी कोन होय माने भीतर थिबो अलगा मेटल ता ऊपरे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेथिबो सुना बुझियला देखिबा पई पूरा सुना भला देखाउ काई कि ना तार ऊपरटा एकदम माइक्रो लेयर रो गोटे सुनार लेप दिया हेथिबो एटा तुम कहती हमर ओडिया घरे सब कहती एटा सुना पानी दे दियो आउथरे पुन चिक चिक हे जो जो सुना पानी दियंती दैट इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जोठी की गोटे इन्फीरियर मेटल ऊपर गोटे सुपीरियर मेटल रो प्लेटिंग करा जाय थाए आउ कोठी देखुचो आउ तो क्रोम प्लेटिंग कोन ना तुमरो पिला मान देखिथिबो गोटे छोटो जिंसटा माने गोटे लुहा यदि लुहाटा को आम पकई दौचे किसी दिन बाहर कलंकी खाई जाऊँ ना किंतु साइकल रो देखि साइकल जोटा तुम धर आगे जो हैंडलटा से हैंडल ऊपर जो गोटे कोटिंग दिया चिक चिक मारते होगा सेटा कौन एत शीघ्र केबे जंग खाएगी साइकल को तुम खरा तरा जो रख मिनिमम 5 to 6 इयर्स पर्यंत देखियो ता ऊपर केबे भी कलंकी टिके लागि नथि सेटा होची क्रोम प्लेटिंग तार तो साइकल रो से जो हैंडलटा से इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ आयरन लुहाटा ही एका किंतु लुहा ऊपर गोटे क्रोम प्लेटिंग करा जाय थाए जो क्रोम प्लेटिंग जो सेते जमा कोन होय जमा भी सेते तुमरो कलंकी लागे ना बहुत दिन पर्यंत कलंकी लागे ना ताले से कलंकी को प्रोटेक्शन करिया पय मध्य आमे गोटे करू कोन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करू बुझिला ताले इलेक्ट्रोलिसिस रो पहिले पांचोटी एप्लीकेशन पढ़ा जोटा कि तुम कोर्स अच्छी कौन एक होची इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओके दुई होची इलेक्ट्रोटाइपिंग तीन होची इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ओके चार होची इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स ओके तुम्हारा नोट्स देखियो प्ले नोट्स सेटिंग देखिए अच्छा नोट्स से चारटा मैं लिखी छी कि पांचटा कहि दोची इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोटाइपिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आउ गोटे इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट सेटा मु कहबी नुवा आउ गोटे जोटा देछि मु बोली 4 नंबर आकारे ऑन नोट्स रे इलेक्ट्रोलिटिक extraction
मु यार गोटे सुंदर 2 पेज रो गोटे पीडीएफ करछि ताको तुम पठै देबी ता पढिबो माने तुमर लिमिटेड ए क्वेश्चन तुमर परीक्षा 2 मार्क्स पढिबो जोटे पढिबो ओनली 2 मार्क्स पढिबो तो 2 मार्क्स पे तुम लिमिटेड 4टा कि 5टा पॉइंट दबो आबुड जब भी गुडा लिखला दरकार नहीं टू द पॉइंट लिखिबो विथ फिगर यू विल गेट वेरी गुड मार्क बुझला तार पे पठै देबी आज केटा जिंस तुम खाली बुझे होची इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑलरेडी तुम बुझी सारे कोन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना गोटे इंफीरियर मेटल ऊपर गोटे सुपीरियर मेटल रो कोटिंग दो सुपीरियर मेटल रो गोटे कोटिंग हला कोटिंग हमें दउछु रंग दउछु हमें जेत हमें घरे पुट्टी हे जाउ ता रंग दिया होछु सेटा गोटे कोटिंग तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कोटिंग एंड दैट कोटिंग सेठी कोटिंग हमें फिजिकल दउछु ताको किए दे दोछि जे हम रंग वाला दे दोछि मिस्त्री से दे दोछि किंतु ए कोटिंग टारे टिके टेक्निकल हैंड दरकार काहे कि ना ए कोटिंग ता करा जो कोठी ना गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक रे करा जो ओके से टैंक रे कोन रखा जो बिले दीटा इलेक्ट्रोड रखा जो इलेक्ट्रोड तो दीटा इलेक्ट्रोड है देखो कोन होची एठी जागला बैटरी गोटे की लगा हला तो वर्तमान कोटा एटा होची एनोड एटा होची कैथोड बुझिला कैथोड रे करबा कैथोड रे कोनटा रखिबा ना जोटा को मैं जोटा का कोन करिया प्लेटिंग करबा सपोज हम घरे गोटे रूपार चामच अछि देखो एटा होची मो घरे दिबा गोटे रूपार चामच हला एटा होची रूपार चामच या ऊपर कोन करबी सुनार कोटिंग करबी रूपार चामच टा गोडी देली हला एटा कैथोड हला तले आनोडटा कोन लेबी आनोडटा लेबी गोल्ड जहार कोटिंग करबी सेही मेटल टा लेबी आगो बुझला आनोडटा कोन लेबो गोल्ड आ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कोन लेबी ना ए आनोड रो गोटे सॉल्यूशन माने कोन AuCl3 औरी क्लोराइड aqueous solution जोटा कि वाटर सॉल्युबल हो aqueous मीडियम रे सॉल्यूशन करी ओके ताले गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन को नेली इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड को नेली कोन एनोड रे आउ सिल्वर को नेली कोन कैथोड रे ताले कोन हो रिएक्शन देखो ताले रिएक्शन कोन होबो ना AuCl3 will produce Au3 plus 3Cl minus at cathode कोन होबो ना तो सिल्वर अछि Au3 plus 3 इलेक्ट्रॉन मिसिले कोन होबो तापर Au डिपोजिट हे जो माने जो सिल्वर थिला धड़ा कलर किछि समय पर से कोन हे जो सोनार कलर हे जो बुझेला ताले एटा हो कोन तुमरो इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे प्ले किछि प्रिकॉशन निया जाय कोन से प्रिकॉशन ना जो करंट ता पास करा जो एटा करंट शुड बी मिली एम्पियर करंट बहुत कम करंट पास कराबो जे बेसी करंट पास करिवो ताले मोटा लेयर बसिबो हमर कोन मोटा दरकार हमर पतला लेयर जते पतला लेयर बसिबो सेते प्रॉफिट तेनु मिली एम्पियर लेवल रे करंट पास करा जाय आ यूनिफॉर्म अनडिस्टर्बेंस माने देखिबो आमे सिना कटक रहउछ बिला हमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन त हो नाही गां मान जीव देखिबो तांकर सेठी गां रे सब बळे कोन होतिबो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होतिबो केतर देखिबो बहुत अधिक करंट पळे आछि केतर कम आछि यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हला ताले कोन हबो ना तुमरो जो डिपॉजिट होउची डिपॉजिट ता टेढ़ा मेढ़ा हिजो माने ढेउ का डिपॉजिट हिजो तो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस शुड बी कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म पूरा सिंगल मोनोटोनिक पास कले आपन सुंदर भाव रे कोटिंग ता बसि बुझिला ताले कोन करे आ गोटे कथा कोन करिवो ना जते बळे इलेक्ट्रोलाइटिक माने कोटिंग करिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो जिंस ऊपर प्लेटिंग करिया को जाउछ ताको आगे प्रथम भल से सफा करिवो कोथरे ना हेतरे ऑयल लागि थै पारे जे तास माने कर से जो नेचर स्पून ता कोटिंग करिया पई तापरे सम ऑयल हैज बीन देयर यदि ऑयल रहि गला ऑयल ता कोन बैड कंडक्टर ता ऊपर आ प्लेटिंग हे परिबो नाही तो प्रथमे ताको भल से कोन सर्फ रे माजी की सफा करिवो तापरे ताको टिके बाली कागज सफा करिवो यदि बाली कागज कोन यदि कोडी कलंकी लागि जाइथिवो कलंकीटा होची कोन ऑक्साइड माने कोन हेटा होची बैड कंडक्टर
ता ऊपर डिपोजिट हो नहीं ताको भलसे बाली कागज सफा कर देले कोन हबो से ऑक्साइड लेयर टा बाहरी गला आ से ऑक्साइड लेयर को आउ टिके भलो रे बाहर करे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड भीतर पुरे दबो नो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बाहर जो तनो सब जाको क्लीन हे गला ता ऊपर कोन से ऑक्साइड लेयर नहीं कि ऑयली लेयर आ किछि नहीं ऑयल नहीं ऑक्साइड नहीं किछि नहीं केवल प्योर मेटल टा अछि आ से प्योर मेटल ऊपर यूनिफॉर्म कोटिंग करबो कोन जे कोनसी मेटल तुम चाहू सुना ऊपर रूपा ऊपर सुना करो कि तुमरो स्टील ऊपर बा तुमरो लोहा ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर जहां कोर्स करो follow this process. This is electroplating. Electrotyping कौन? Electrotyping होची आउर जिंस जोठी की गोटे लेटर किंबा गोटे स्टैच्यू किंबा गोटे मॉन्यूमेंट तो तार एग्जैक्ट रेप्लिका तैयारी करिवो बुझिला सपोज मु कहली ए देखो ई गोटे मोर कार अछि मु चाहूची ए कार रो गोटे एग्जैक्ट रेप्लिका तैयारी करिवो केमती रेप्लिका तैयारी करी ना फास्ट कौन करी ना गोटे छोटो ताटिया नहीं माने ए जो ताटिया रे कारटा कौन होतिबो रही पाथो से छोटो ताटिया रे ए कारटा रखि देली ओके रखि सला पर ता ऊपर कौन करबी ना पक्के देबी तुमरो कोन मोल्टन वैक्स तो मोल्टन वैक्स पक्के देली कोन होला पूरा एकदम कवर कर देली मोल्टन वैक्स पक्के देले कारटा रही गला मोल्टन वैक्स उतरे हला अध घंटे पर कौन ठंडा है ताको काट दे काट दे तो कार जो इंप्रेशन टा कोड रही गला कोड रही गला वैक्स भीतर रही गला कार टा काट देली कि तार इंप्रेशन टा रही गला कोठी वैक्स ऊपर तापर कौन करे ना से जो वैक्स ऊपर ग्राफाइट कोटिंग कर देली देखो माने एटा हो वैक्स रो स्लैब एट मोर इंप्रेशन है गला एटी कार रो इंप्रेशन टा देली तापर कौन करले ना एटा मिटु पसी आछि वैक्स स्लैब ता भीतर कार रे इंप्रेशन ता अछि ताके कौन करले ना ग्राफाइट कोटिंग कर दे चारि पट करे दरकार ए भीतरटा करी कि कंडक्टिविटी पाई एति ग्राफाइट कोटिंग कर देली आ भीतरटा कर देली करसला पर ताके कौन करना कनेक्ट कर देली कोन कैथोड डा कर देली कैथोड एटा कर देली एनोड सॉरी एनोड टा को एक नहीं गली एटा एनोड नहीं ओके कनेक्ट कर दो कोडी बैटरी रे ओके नाउ दिस इज माय इलेक्ट्रिसिस एटा ला कोन एनोड एटा ला कैथोड सपोज ता एटा कोन दिया है सो प्लेट कोन एटा कोन सो लगा है जी एटा सो दिया है कोन एटा सो लागि कोन तुमरो ग्राफाइट कोटिंग ओके सपोज मु कार का चाहूची मु सिल्वर कार करी कि गोल्ड रो कार करी ताले मोर गोल्ड रो कारटा करे अछि से कार रो गोल्डन रिप्रिंट टा करी ताले एटा कोन करी सिल्वर एयु नै सॉल्यूशन टा नै कोन एयु सी माने को मोबाइल ते पैसा नै सिल्वर रे करी ताले एटा नै सिल्वर आ एटा नै सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टा नै सिल्वर नाइट्रेट aqueous ओके सॉल्यूशन टा सिल्वर नाइट्रेट हे गला एटा सिल्वर हे गला ता तो सिल्वर टा धीरे धीरे मेल्ट करिवो या ऊपर डिपोजिट हो धीरे धीरे करी स्लो एंड स्टेडी करंट देकरी पाखा 10 मिनिट 12 घंटा लागो डिपोजिट करबा धीरे धीरे लेयर बस कोन होला जेतले वैक्स टा पूरा फिल अप हे गला जो इंप्रेशन टा थिला टोटल फिल अप हे गला डिस्कनेक्ट करके नहीं आसली बुझेला वैक्स टा को मेल्ट कर देली वैक्स पळे गला ऊपर जो ग्राफाइट लेयर लागि छी ताको टिके साबुन रे घसी छड़ाई देली बर्तन पाइली कोन पूरा ब्रांड न्यू कार व्हिच इज मेड अप ऑफ सिल्वर रूपार कार पाई पूरा डिटो से बड़ा कार टे पाई एटा बोलते इलेक्ट्रोटाइपिंग ओके आउ होची इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रे बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस कोन करा जाय सेठी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रे देखो हमर ओटे मेटल अछि कॉपर एक्सट्रैक्शन करा तुमरो ओटे चैप्टर भी अछि कॉपर एक्सट्रैक्शन धातु निष्कासन कॉपर एक्सट्रैक्शन रो टर्मिनल प्रोसेस माने लास्ट प्रोसेस होजी कोन ना कॉपर रो रिफाइनिंग केमति हुए ना रिफाइनिंग रे एमटी दी प्रकार मेटल है गोटे मेटल होची प्ले एनोड गोटे होची प्योर कैथोड हला एटा होची कोन प्योर कॉपर एटा होची कोन ना इम्प्योर 90% हमर कॉपर अछि आ 10% इम्प्योरिटी अछि आको कोन करिना मु
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर देली हला कॉपर सल्फेट नेली CuSO4 aqueous सॉल्यूशन नेली ओके जेतला कि मो इलेक्ट्रिक इम्प्योर कॉपर नेली दिस इज इम्प्योर कॉपर एटा होची प्योर 100% 99.99% प्योर हला 100% कुआ जाय नै 99.99% कॉपर ओके ताले एटा होची पूरा प्योर कॉपर एटा होची इम्प्योर कॉपर वर्तमान ए जो प्रोसेस ता हला कोन इलेक्ट्रिसिटी रिफाइन जो थरे कि ओटे इम्प्योर कॉपर रो मु प्योर कॉपर पाई जेतरे इलेक्ट्रिसिस करा जेबो कोन हबो ना जो इम्प्योर कॉपर ता धीरे धीरे डिसॉल्व करला स्टार्ट करबो अटैकेबल इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट एटा जो कॉपर एनोड डिसॉल्व कर कोन दबो ना कॉपर 2 aqueous दबो प्लस SO4 2 हला 8 कैथोड कोन हबो कॉपर डिपोजिट कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर हला जो कॉपर टा डिपोजिट हो या ऊपरे हला जो कॉपर टा डिपोजिट हो सेटा 100% प्योर 100 तो कुआ जाय ताको 99.99% प्योर कॉपर कुआ जाय एटा होच कोन इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग एथि कोन करा जाय ना 90% वाला प्योरिटी कॉपर रु 100% वाला प्योरिटी कॉपर हमें पाए ओके दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तापरे आ वर्ष तुमर कहिथिन कोनटा जो सब पढ़ियो बहुत सुंदर लिखाई छी बहुत भले लिखाई छी देखो ए जो हला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्ले ए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेले कोन होय ना ए तळे सब हला ए जो कॉपर इम्प्योर कॉपर रे 90% कॉपर थिला आउ इम्प्योरिटी कोन थाय जानि छ ता इम्प्योरिटी थाय गोल्ड सिल्वर आर्सेनिक एवरा सब एलिमेंट माने ताले एठू ए जो जिनसा तोरा डिपोजिट ला आ कोंती कोन कहलो एनोड मॉड आ कोंती एनोड मॉड हला मॉड बोले कोन माटी ए तळे जो बसे त एनोड मॉड कोंती से एनोड मोड रो प्रेशियस मेटल को बाहर करा जाय बुझला विभिन्न प्रकार मेटल मध्ये एतरो ए जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रो एटा ଗୋଟେ प्रोसेस रे जो मोड ता बाहर से मोड रो नुवा नुवा मेटल सब बाहर करा जाय बुझला सेटा गोटे होता आ गोटे होची कोन सपोज गोटे मेटल पे नुवा एलिमेंट गोटे हमें जानिनी सपोज हमें जो कहंती गोटे माइनिंग चलची गोटे जगह डिगिंग चलची खोला चलची गोटे अलग प्रकार गोटे मेटल बाहला से मेटल ता कोन हमें जानने से मेटल ता कोन हाउ टू नो दैट से मेटल ता कोन से केमी जानबे से मेटल ता कोन ताले कोन करबा ना ताको आनिला इलेक्ट्रोलिसिस करिया बुझला ताको आनी कोन करबा इलेक्ट्रोलिसिस करबा केमी इलेक्ट्रोलिसिस करबा देखो माने कर हम कोन करी ना हला सेही मेटल टा को मानी कि सपोज गोटे इलेक्ट्रोड बनेली बनेगी ताको कनेक्ट कर ओके तो वर्तमान कोन करना जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करली हमें फैराडेस लॉ रे फैराडेस लॉ में पढ़छि बुझिला फैराडे सेकंड लॉ रे कोन पढ़छि ना W कॉपर बाय W मन कर इन मेटालिक अननोन इक्वल टू E कॉपर बाय E अननोन बुझिला ये फैराडे सेकंड लॉ फॉलो करो फर्स्ट लॉ में फैराडे सेकंड लॉ फॉलो करो मन कर एटा आउ गोटे से मिसि जा हला तो फॉलो मन ए डब्ल्यू कॉपर सॉल्यूशन ले कॉपर सल्फेट हला नहले ଗୋଟେ କାମ କରିବ କପର ନ ଦରକାର ନାହିଁ सोडा प्लैटिनम ले जाओ एटा 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 प्लैटिनम ले जाओ हला एठी कोन होला कॉपर सल्फेट है CuSO4 कोन होला डी CuSO4 सॉल्यूशन aqueous है
एठी जो मेटाल तुम पाइथिलो से मेटाल टाको चेष्टा करिवो गोटे सॉल्यूशन रे कन्वर्ट करिया पई केमति ना से मेटाल को HCl रे पकाओ रिएक्शन कला जदी तार गोटे सॉल्ट फॉर्मेशन हला सेही सॉल्ट रो सॉल्यूशन टाको एठी यूज करिवो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड सेही सॉल्ट रो सॉल्यूशन टाको यूज करो मन कर जदी HCl से रिएक्शन कला नहीं ताले सल्फ्यूरिक एसिड दियो नाइट्रिक एसिड दियो एस्टिक एसिड दियो कोन सोटे एसिड से रिएक्शन करेगी बा कोन सोटे अल्काली से रिएक्शन करेगी तापर सॉल्ट करो आ से सॉल्ट रो सॉल्यूशन टाको एठी यूज करो ताले एटा होछ अननोन से सॉल्ट रो सॉल्यूशन टाको यूज कलो हां ताले एठी कोन हो एटा बंदर माइनस एठी कैथोड डिपोजिट हो जो अननोन मेटल का डिपोजिट ला केते ग्राम को ताको हमें जानि परिया को एठी ताले वेट ऑफ द कॉपर मापी परिबा एठी वेट ऑफ द कॉपर केते जानिले वेट ऑफ द अननोन मेटल एठी केते डिपोजिट ला मेटल हम जानि पाले ताले वेट ऑफ कॉपर जानिले वेट ऑफ अननोन मेटल भी जानिले तो एक्सपेरिमेंट करी हम जानि परिबा ई ऑफ कॉपर हम जानि छे ई ऑफ कॉपर केते 31 31.75 में 32.5 into recount 63.5 में कॉपर 65 को दिखली 63.5 बोले 63.5 कॉपर बाय 2 माने 31.75 ताले ई कॉपर 31.75 ताले ई अननोन मेटल पाई यदि अननोन मेटल रो इक्विवेलेंट मास पाइलो ताले तारो से मेटल टा कोन हला तमे बाहर कर पाइबो ओके सो दिस आर ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी रो जो दीटा पार्ट कहउतली गोटे पार्ट 1 गोटे होची पार्ट 2 तो पार्ट 1 टा अभी सॉल्व पार्ट 1 रे हमें कोन करले पार्ट 1 रे हमें इलेक्ट्रिसिटी देले वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी and you are carrying out oxidation and reduction okay किंतु पार्ट 2 रे कोन पढिबा now we will carry out oxidation and reduction and will generate electricity ताले पार्ट 1 रे कोन पढिले इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करबा केमिकल रिएक्शन करबा सिखिले पार्ट 2 रे पढिबा इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करबा माने जो बैटरी तैयारी करबा we will prepare will know the concept of making batteries, how to prepare electrochemical cells. That means chemical reaction will be carrying out and will generate electricity. सुनी थिबो बा स्कूल ले किछि किछि प्रोजेक्ट माने सार माने करंती गोबर रो विद्युत शक्ति आलू रो विद्युत शक्ति जो सब प्रोजेक्ट करथिलो सेही प्रोजेक्ट रे जो जिंसटा लुकायित भाबरे थिला हिडन अवस्था रे थिला तुम जानि नथिलो सेही विषय एक्चुअल पाठटी रे पढो केमिति आलू रो विद्युत शक्ति होउची बा गोबर रो विद्युत शक्ति केमिति आसिला बा माइकल फैराडे जे होछंती फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेंगोर चमड़ा को क्लिप रे बांधी गिरी सुखेइतिले वर्षा हला बिजुली मारला से बेंग चमड़ाटी फड़फड़ फड़फड़ होइगिरी जेतोले हलिबा आरंभ कला सेठी तांको मुंडरे पसिला बेंगटा तो मरि जाईची ता चमड़ाटा काई फड़फड़ हला सेठु बाहर जे कांसेप्ट बुझिला बले सी जो कांसेप्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन सेटा हम पढिबा पार्ट 2 रे वेरी सून हमें दबासिडा थैंक यू।